Hello everyone, this is CA Samiksha Sethia, and in today's video we are going to discuss the RTP November 2020 for CA Intermediate New Syllabus Economics for Finance, that is your paper number 8B. पेपर 8B का हम लोग RTP जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स जो कि आगे के टर्म्स में एग्जामिनेशन देने वाले हैं. आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि RTP से हमें एक आइडिया लग जाता है कि इंस्टीट्यूट किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाएंगे, बट काफ़ी बार सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड ऑल्सो हमारी क्वेश्चन आंसर्स की भी जो है प्रैक्टिस हो जाती है. Okay, so let us start with the first question, which is related to your national income accounting. We have to compute NNP at FC, NNP at market price, GNP at MP and GDP at market price from the given data. Let us check the data. Operating surplus is given 2000 crore, mixed income of self-employed is given 1100 crores, rent 550, profit 800, net indirect taxes 450, consumption of fixed capital is given 400, that is your depreciation. Net income from abroad, net factor income from abroad is given as -50, and compensation of employees is given as 1000. We have to compute NNP at FC, NNP at MP, GNP at MP and GDP at the market price from the given data. So we can see that the data is relating to which method of national income accounting? It is related to मैम income method of national income accounting. ठीक है, income method में हम लोग NNP at FC को कैसे कैलकुलेट करते हैं? NNP at FC में हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड करते हैं, विच इंक्लूड्स आर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का अमाउंट. सो ऑपरेटिंग सरप्लस वी विल ऐड, दैट इज 2000 crores. Then we also include the mixed income of self-employed, 1100 will be added, that means 3100, and we also include the compensation of employees, that is 1000 will also be added. So it will be 2000 plus 1100 plus 1000. इससे हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है वो आ जाएगा. नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमको NFIE का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, विच इज -50. So 2000 plus 1100 plus 1000 is your 4100, and 4100 में से we have to subtract 50 because net factor income abroad from abroad helps also to be adjusted for calculating NNP at FC. So the answer for the first one will be 4050, that is 4050 crores. Next is NNP at market price has to be calculated. Net national product at market price. तो we have already calculated NNP at FC. उस पे हम सिर्फ indirect adjustment, indirect taxes को add कर देंगे, net indirect taxes को, because the only difference is between factor cost and market price, and the difference between factor cost and market price is due to the presence of net indirect taxes. So we will also add 450 to it, that means 4500 crores is the answer for your net national product at market price. Next we have to calculate GNP at market price. So the only difference between NNP at market price and GNP at market price is your depreciation or the consumption of fixed capital. Net में हम लोग depreciation को नहीं include करते, gross में हमको depreciation को include करना है. So 4500 was our answer for NNP at MP. Now we have to add depreciation to that. So 4500 plus 400, that means 4900 crores is the answer for gross national product at market price. GNP at MP is equal to NNP at MP plus consumption of fixed capital. Now we have to calculate GDP at market price. तो GDP को calculate करने के लिए हमको net factor income from abroad को हटाना है. Now we have to subtract the net factor income earned from abroad, and it is already given in minus. So basically it will be 4900 minus -50. So it will be 4950 crores. So 4950 crores is our GDP at market price, because in national, whenever we are computing an aggregate at the national measure, in that we adjust the NFIA, that means we add the NFIA, और domestic calculate करने के लिए we subtract the NFIA. तो यहाँ पे already negative में था, इसलिए 4900 minus -50, that is 4950. Right, next question देखते हैं. A sells a used car to B and receives rupees 60,000. How much of the sale proceeds will be included in national income calculation? So we know that national income is a flow concept, that means it is calculated per period of time. ये जो 60,000 का कार, यूज्ड कार A ने B को सेल किया, ये ऑलरेडी किसी दूसरे ईयर में प्रोड्यूस हुआ होगा,
ठीक है, और उस ईयर की नेशनल इनकम में जब वो कार फर्स्ट टाइम सेल हुई होगी या फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई होगी तो वो ऑलरेडी उस ईयर के नेशनल इनकम में आ चुका है. सो इन द करंट ईयर वी विल नॉट इंक्लूड दैट द सेल ऑफ द यूज्ड कार बिकॉज नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. सो यू हैव टू गिव द रीजन व्हाई you are not going to include. The question is asking how much the sale proceeds will be included. So we will not include any amount of this used car being sold to from A to B because it has already been included in the earlier year in which maybe the car was sold for the first time or it was manufactured. If production method was followed तो manufacture जब हुआ होगा तब उसको include कर लिया गया होगा. So hence no value of 60,000 will be included. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. कंजम्पशन C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.9 YD. YD इज आर डिस्पोजेबल इनकम. इन्वेस्टमेंट I इज इक्वल टू 10. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G इज गिवन 10. टैक्सेस T इज 0. दिस इज योर इनकम टैक्सेस और द पर्सनल टैक्सेस जो कि हम अगर हम डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं तो हम इनकम में से टैक्सेस को लेस कर देते हैं. यहाँ पे टैक्सेस 0 है. सो इनकम इज इक्वल टू योर डिस्पोजेबल इनकम. दैट मीन्स YD इज इक्वल टू Y एक्चुअली. एक्सपोर्ट्स इज गिवन X इज इक्वल टू 20. इम्पोर्ट्स इज गिवन M इज इक्वल टू 10 प्लस 0.05 Y. हमें निकालना क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है एंड ट्रेड बैलेंस निकालना है. सो एट इक्विलिब्रियम लेवल वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. दैट मीन्स Y जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई Y विल बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से जाएं तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. नाउ हियर C इज गिवन एज 60 प्लस 0.09 YD. तो YD को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? Y माइनस टैक्सेस. इनसाइड द ब्रैकेट Y माइनस टैक्सेस एंड टैक्सेस इज 0. सो बेसिकली इट विल बी 60 प्लस 0.9 Y. And then we will add investment plus 10, government expenditure plus 10, exports plus 20, and we will subtract 10 and 0.05 Y. Right? तो एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हमें ट्रेड बैलेंस भी कंप्यूट करना है. Let's see. So y is equal to C plus I plus G plus X minus M. यहाँ पे C में जो YD था उसको रिप्लेस कर दिए Y minus 0 से. टैक्सेस इज 0. Hence Y हमारा आ गया 600. Y is equal to 600. that is the equilibrium level of output is 600. now in order to compute the trade balance हम लोग M का जो इक्वेशन था, M क्या था हमारा? M था मैम 10 प्लस 0.05 Y. तो उस Y के जगह हम 600 को पुट कर देंगे एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड ट्रेड बैलेंस इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट. यहाँ पे ट्रेड बैलेंस -20 है. दैट मीन्स ट्रेड बैलेंस इज इन डेफिसिट. अगर पॉजिटिव आता तो हम उसको कहते हैं फेवरेबल ट्रेड बैलेंस और अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, सरप्लस ट्रेड बैलेंस. राइट. Next question. Explain with the help of a diagram how an increase in the marginal propensity to consume impacts the consumption expenditure. So we know the consumption expenditures equation is C is equal to A plus BY, wherein B represents the marginal propensity to consume. That is the proportion of income of a consumer which the person spends on the consumption expenditure. A represents the autonomous expenditure and BY represents the portion of income, the variable portion which we are going to spend as the consumption expenditure. Now if B increases, if the marginal propensity to consume will increase, of course the consumption expenditure will increase. So we have to establish the relationship between marginal propensity to consume and the consumption expenditure. So we can draw a diagram for that. Let's see the answer once. As B increases, of course the कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो इंक्रीज. इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पे हम लोग y एक्सिस पे जो है लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, x एक्सिस पे हम लेते हैं इनकम को. ठीक है. कंजम्पशन का जो कर्व है वो कैसा दिखता है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन बट it doesn't start from the origin. थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है because this level is your autonomous expenditure. तो ये इक्वेशन क्या हो गया? A is equal to C is equal to A plus BY. Now if B increases, suppose ये यहाँ पे B 0.6 है. ठीक है. अब B अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये कर्व शिफ्ट होके कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, थोड़ा और स्टीप हो जाएगा. हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि मैम अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ी और एमपीसी इंक्रीज हो गया तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. सो वी कैन सी, देखो इनकम अगर ये लेवल है, ठीक है, और एमपीसी जब 0.6 था तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना आएगा. बट अगर हमारा जो
MPC है वो बढ़ के 0.8 हो जाता है और कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है. सी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज बिकॉज वो फिक्स्ड है. ठीक है, A इज ऑलवेज फिक्स्ड. यहाँ पे देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना आएगा, बट इस लेवल पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज एंड इट विल बिकम टू दिस लेवल. सो यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस एंड इलस्ट्रेट. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो 0.6 से चेंज होकर अगर 0.8 हो गया एंड इनकम इज से फॉर एग्जांपल 200, तो कंजम्पशन राइजेस फ्रॉम से दिस इज 140 एंड दिस बिकम्स 180. ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है और डायग्राम ड्रॉ करना है. डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमेशा याद रखेंगे आपको, अभी तो मैंने रफ में आपको समझाया, तो आप जब फेयर ड्रॉ करोगे डायग्राम यू हैव टू मार्क द एक्सिस एंड राइट द इक्वेशंस प्रॉपर्ली. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मस्ग्रेव there are 3 branch taxonomy of the role of government in a market economy. Explain. So we know that government का 3 functions होता है as per the Richard Musgrave's 3 branch taxonomy. क्या क्या 3 फंक्शंस होते हैं? एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड द स्टेबलाइजेशन फंक्शन. द फर्स्ट 2 functions, that is allocation and redistribution, are microeconomic functions and the stabilization function is the macroeconomic functions which makes use of the monetary policy and the fiscal policy in order to bring stability in the economy. Right? Next question, why do economists use the word external to describe third party effects that are harmful or beneficial? सो ये हमने कहाँ पे पढ़ा है मैम? ये हमने पढ़ा है एक्सटर्नलिटीज में. वी नो दैट देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑल्सो. So why do economists use this word external for describing the externalities? They are using the word external because the impact, the effect of these factors is not taken into account in the price or cost of the product or service. इनका जो इफेक्ट है, चाहे हार्मफुल हो चाहे बेनिफिशियल हो, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता है इन द प्राइस और कॉस्ट. हेंस इट इज एक्सटर्नल टू द मार्केट. मार्केट के अंदर ना ही उसका बेनिफिट ना ही उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कॉस्ट के तरह या प्राइस के टर्म्स में मेजर किया जाता है. हेंस इट इज एक्सटर्नल टू द मार्केट इकोनॉमी. इट इज नॉट इनबिल्ट. It is not inbuilt in the price or cost of the product or service. Hence, economists इसको external कहते हैं. Next question, why do government provide subsidies? Illustrate few example of subsidies. तो subsidies क्या होते हैं? Subsidy is a policy wherein the government is reimbursing certain part of cost of a product or service. The government is providing for certain cost or benefit to the providing for certain portion of the cost of a product or service. ठीक है, ये गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करता है? वाई डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैविंग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, विच इज हैविंग सोशल बेनिफिट, विच इज रिजल्टिंग इन सोशल बेनिफिट टू द सोसाइटी. फॉर दोज काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. सब्सिडी प्रोवाइड करने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. हेंस उस गुड या सर्विस की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट कम होने से सप्लाई विल इंक्रीज. द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द right, supply curve shifts towards the right, and hence production increases and the social benefit of this good and service which is having a positive externality, positive effect on the economy, वो भी increase हो जाता है. Examples of subsidies क्या हैं? जैसे गवर्नमेंट unemployment benefits provide करती है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन सेस प्रोवाइड करती है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन. एंड देन गवर्नमेंट ऑल्सो गिव सर्टेन काइंड ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज. इससे क्या होता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो कॉस्ट है टू द कंपनी और टू द फर्म इन विच दे आर हायर्ड वो भी रिड्यूस हो जाती है, एंड द सोशल बेनिफिट ऑल्सो इंक्रीजेस. Right, next question, describe the concept of price floors with example. So what is price floor? Price floor means minimum price which is established below which a particular good or service or a commodity cannot be sold. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम प्राइस और प्राइस फ्लोर्स ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक ग्रेन्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, इनका मिनिमम प्राइस एस्टैब्लिश कर देने से क्या होता है? नोबडी कैन सेल एट अ प्राइस विच इज बिलो दिस, और इफ यू हैव टू परचेज दैट कमोडिटी आपको मिनिमम उतना प्राइस पे करना पड़ेगा. प्राइस फ्लोर्स आर जनरली अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस विच इज केप्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सप्लायर्स. इसका एक एग्जाम्पल मिनिमम वेज सिस्टम भी हो सकता है कि किसी को भी एम्प्लॉयर को लेबरर्स को रखना है तो मिनिमम वेज इतना देना पड़ेगा. राइट,
Next question, tradable emission permits are claimed to have certain advantages. Explain. Tradable emission permits क्या होती हैं? This is also a means adopted by the government in order to reduce the pollution, in order to just like we have pollution tax, Pigovian taxes, similarly tradable emission permits भी इस negative externality जो कि pollution है इसको reduce करने का government का एक तरीका है. इसके advantages क्या हैं? These tradable emission permits are freely transferable. Hence, the firms are having an incentive that they reduce the level of pollution. Innovative methods firms जो है वो adopt करें, उससे क्या होगा? उनका pollution level कम हो जाएगा. तो tradable emission permits जो उनको दिए गए थे कि this much pollutants you can release, वो उनका surplus हो जाएगा and they will be able to sell them, and from selling them they will be able to get some profit. So hence it is acting as an incentive for the firms to reduce the pollution level. It is also a very flexible and rewarding method when it comes to the firms. फ्लेक्सिबल है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका इजी हो जाता है. पोल्यूशन टैक्स लगाने के लिए काफ़ी सारा कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ता है. फॉर दीज ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑल्सो आर चीपर कंपेयर टू अदर वेज ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री थियोरेटिक अप्रोच. सो रिमेंबर द Baumol-Tobin concept of the inventory theoretic approach, wherein they stated just like we have to bear inventory holding cost, we have to bear inventory holding cost for keeping inventory. Similarly, अगर आप कैश बैलेंस रखते हैं in the form of inventory, उसका भी एक opportunity cost in the form of interest which is foregone if you had invested that amount in the bonds. So Baumol-Tobin के हिसाब से there are two alternatives in which you can store inventory, either in the form of cash or you can invest it in an interest bearing alternative asset, that is a bond or any debenture, right. bond के अंदर हम investment करके उससे interest gain कर सकते हैं. Now according to the inventory theoretic approach, they are saying that the average cash balance, that is the average inventory of cash, will depend on the opportunity cost of keeping that cash, that is the carrying cost. इन्होंने term क्या use किया उसके लिए? Carrying cost. cash को hold करने के लिए जो person है उसको bear करना पड़ेगा individual को carrying cost, which is nothing but the opportunity cost of कीपिंग दैट कैश, दैट इज द इंटरेस्ट दैट इज फोरगोन. अगर हम बॉन्ड्स में उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करते तो उससे हमें एक इंटरेस्ट मिलता, बट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ब्रोकरेज फी या फिर कोई ट्रांसफर फी भी पेमेंट करनी पड़ेगी. सो द इंटरेस्ट फोरगोन फ्रॉम इन्वेस्टिंग द फंड्स, द कैश बैलेंस इनटू बॉन्ड्स, less the transfer cost that is to be borne if investment is to be done in the form of bonds. सो इसको सब्ट्रैक्ट करके जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो आ जाते हैं. अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस एवरेज कैश बैलेंस विल बी लेस, वी विल इन्वेस्ट मोर इन द बॉन्ड्स. बट इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज very low, in that case average cash holding can be high also. Average cash inventory जो है, average inventory of cash balances depends on the number of times transfer is being made between cash and bond. ठीक है, कितनी बार आप बार बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर उसको रिडीम कर रहे हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर रिडीम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना एवरेज में आपके हाथ में कितना कैश बैलेंस रह रहा है. सो इट इज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रांसफर इज बीइंग मेड फ्रॉम कैश टू बॉन्ड्स. अब नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये ट्रांसफर फी पे डिपेंड करता है, ट्रांसफर कॉस्ट पे. सो इफ द ब्रोकरेज फीस इज वेरी हाई, इन दैट केस वी विल डू लेस ट्रांसफर एंड हेंस एवरेज कैश बैलेंस विल बी हाई, एवरेज इन्वेंट्री विल बी हाई. बट ऑन द अदर हैंड इफ ब्रोकरेज फीस इज वेरी लेस, तो हम लोग जो इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड से उसको रीप करने के लिए वी विल इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स एंड हेंस द एवरेज कैश बैलेंस इन्वेंट्री का विल बी लो. राइट, यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ इज द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमी रिफ्लेक्टेड? एक्सप्लेन. सो सेंट्रल बैंक इज द रेगुलेटर ऑफ the entire money supply in the economy. You know the high powered money is regulated by the central bank. So अगर commercial banks कोई भी लेन देन ना करे, no credit creation by the commercial banks, in that case the entire money supply in the economy, कितना money in circulation रहेगा, will depend on how much high powered money is being issued by the government, or how much this high powered money is money stock कितना है, which is dependent on the high powered money, right? Yes. Next question. Distinguish between M1 and M2 and find M1 when a country has the following monetary asset information. ये question ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स को confusion हो सकती है.
M1 क्या होता है मैम? M1 होता है करेंसी विथ द पब्लिक प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स plus the deposits with the RBI or the balances of the banks with the RBI, other deposits with the RBI. And M2 क्या होता है? M2 is M1 plus savings deposit with the post office banks. Now ये जो पहला M1 में डिमांड डिपॉजिट था, इसके अंदर में आते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट्स एंड दैट पार्ट ऑफ द सेविंग डिपॉजिट्स विच इज एक्सेप्टेड एज अ डिमांड लायबिलिटी बाय द बैंक. मतलब क्या? मतलब ये कि सेविंग बैंक अकाउंट का वो हिस्सा जो कि आप ऑन डिमांड बैंक से मांग सकते हैं. हो सकता है सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है ना, तो वो ऑन डिमांड हम नहीं मांग सकते हैं, बट ओवर एंड अबव द मिनिमम बैलेंस जो है वो हम ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट पार्ट ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट विच इज फ्रीली अवेलेबल, दैट इज विच इज अवेलेबल ऑन डिमांड, राइट. तो M1 M2 मैंने बता दिया क्या है. अब M1 हमें कैलकुलेट करना है. कैश इन हैंड ऑफ द पब्लिक दिया है, डिमांड डिपॉजिट दिया है, सेविंग्स टाइप अकाउंट दिया है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स दिया है, ट्रैवलर्स चेक्स दिया है. ट्रैवलर्स चेक्स आर ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट्स बिकॉज यू हैव टू द बैंक हैज टू पे दैट ऑन डिमांड. स्मॉल टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स फॉर मेच्योरिटी ऑफ से लेस देन 1 ईयर या फिर लार्ज टाइम डिपॉजिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर और 2 ईयर्स, ठीक है. एंड अदर चेकेबल डिपॉजिट्स. चेकेबल डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स जो ऑन डिमांड बैंक को पे करना पड़ेगा. सो M1 के अंदर क्या क्या आता है? करेंसी विथ द पब्लिक, दैट इज कैश इन हैंड तो आएगा ही. फिर आपका डिमांड डिपॉजिट्स आता है जिसमें करंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट प्लस सेविंग प्लस द डिमांड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट. यहाँ पे ये जो सोल्यूशन किया हुआ है ना, इसमें सेविंग टाइप अकाउंट को नहीं इंक्लूड किया है. सो दिस इज अ ट्रिक हियर. यहाँ पे सेविंग टाइप अकाउंट को नहीं इंक्लूड किया बिकॉज दे हैव अज्यूम्ड दैट दिस इज नॉट अ डिमांड डिपॉजिट. This is not a demand deposit and hence has not been added in M1. तो आप एग्जाम में अगर आपको लगता है सेविंग टाइप आपको इंक्लूड करना है तो यू कैन जस्ट राइट अ नोट ओवर देयर, assume that this is the demand liability part of the saving deposit account, right? So we will include cash in hand 300 plus 400, that is 700. Travelers checks will be included and other checkable deposits will be included. So 700, 750, 800 and 900. So to total answer is 900 million. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ऑफ ट्रेड. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट क्या क्या थे? यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट थी जिसमें इंपोर्टिंग कंट्री इज गिविंग बेनिफिट टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री, सो द एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन बी एनकरेज टू इंडल्ज इन द इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज. उसके बाद बाईलैटरल अग्रीमेंट्स थे विच इज बिटवीन 2 कंट्रीज और 2 ब्लॉक्स और 2 ट्रेडिंग ब्लॉक्स. देन वी हैड दिस प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स, वी हैड द फ्री ट्रेड एरिया, मॉनेटरी यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन. तो उन सब के बारे में हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर द FDIs categorized according to the nature of foreign investment? Describe them. तो foreign investment FDI can be categorized into horizontal investment, vertical investment and conglomerate investment. Horizontal, vertical and conglomerate. Horizontal means the foreign country, the country is investing, the company which is there in the home country is investing in the same business in the foreign country also. Same operations they are going to undertake in the foreign country also. उसको हम कहते हैं horizontal. Same है ना? Vertical means it is relating to their operations in the home country. That means the company will invest in some operation which is related to their business in the home country. And conglomerate means investment in some unrelated business which is in no way related to their business in the home country. Foreign country में हम ऐसे business में invest करेंगे जहाँ पे हमको कोई experience नहीं है अपने home country के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मेरा होम कंट्री के अंदर जो बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स एंड मैं फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करती हूँ इन सॉफ्टवेयर, से फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कंपनी. तो उस केस में ये एग्जाम्पल हो गया कॉन्ग्लोमरेट FDI का, राइट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स स्टिप्यूलेट? ट्रिम्स. तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर जो अग्रीमेंट है वो ये कहता है कि देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस और एनी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड बाय डिफरेंट कंट्रीज, एंड
investment which is coming from foreign country should be given national treatment. That means equal treatment, treatment of national principle has to be given from investment which is coming from a foreign country. So international capital and domestic capital should be given equal treatment. No restriction or conditions on the foreign capital or investment should be there, right? Okay, next question देखते हैं. Countries Roseland and Daisyland have a total of 4,000 hours each of labor available each day to produce shirts and trousers. Both countries use equal number of hours on each good each day. Roseland produces 800 shirts and 500 trousers per day. Daisyland produces 500 shirts and 250 trousers per day. In the absence of trade, which country has absolute advantage in producing shirts or trousers? And आपको comparative advantage भी बताना है किस country का ज़्यादा है. So question is regarding absolute advantage and comparative advantage. So two countries, two commodities, and we have to compute the absolute advantage and comparative advantage. 4000 घंटे हर country के पास available है each day और equally divide करके रखा है दोनों commodities के लिए, that is shirts and trousers. So सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे एक शर्ट को प्रोड्यूस करने में और एक ट्राउजर को प्रोड्यूस करने में दोनों कंट्रीज को कितने आवर्स लगते हैं. दैट इज आवर्स रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड. सो दिस इज द टेबल. रोजलैंड 800 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 500 ट्राउजर्स. डेजीलैंड 500 शर्ट्स एंड 250 ट्राउजर्स. दोनों ही गुड्स के लिए दोनों कंट्रीज 2000 आवर्स इन्वेस्ट कर रही है. सो इफ वी डिवाइड 2000 बाई 800 वी गेट 2.5 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, 4 hours are required for one trouser. For country Daisyland, 4 hours for one shirt and 8 hours for one trouser. So clearly we can see that Roseland is producing both the commodities in less time. That is उसका जो cost of production है वो कम होगा for both the commodities. Hence it is having absolute advantage in both shirts and trousers. Comparative advantage compute करने के लिए हमें opportunity cost निकालना पड़ता है. It is basically we are comparing कि रोजलैंड किस चीज में बेटर है. इज इट बेटर इन शर्ट्स और इज इट बेटर इन ट्राउजर्स? एंड डेजीलैंड इज बेटर इन विच? बेटर एज इन इसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किस में कम है? डेजीलैंड का ऐसे तो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दोनों में ही है, बट कम किसके अंदर है ये हमें निकालना है. सो वी एक्सप्रेस शर्ट्स इन टर्म्स ऑफ ट्राउजर्स एंड ट्राउजर्स इन टर्म्स ऑफ शर्ट. कि रोजलैंड अगर शर्ट्स नहीं बनाए, so what will be the opportunity cost of shirts? It is 0.625. that is we divide 2.5 hours divide by 4 hours. So opportunity cost of shirts is 0.625 and opportunity cost for trousers is 4 divided by 2.5. that is we are expressing trousers in terms of shirts. So for producing one trouser, they have to give up what, ma'am? They have to give up 1.6 shirts. And similarly for Daisyland, for producing one shirt they have to give 0.5 trousers, but for producing one trouser they have to give 2 shirts. So opportunity cost in case of shirts, इनका opportunity cost कम है in case of shirts Daisyland का, so they have a comparative advantage for production of shirts. And in case of Roseland, their opportunity cost is lower for trousers. Their opportunity cost is lower for trousers as compared to the Daisyland, and hence they have a comparative advantage for production of trousers, right? So this brings us to the end of the discussion of RTP November 2020 for your economics for finance. If you have any doubt in this, you can post in the comment section below. Thank you so much everyone for watching and have a great day ahead. Stay blessed and all the best for your examinations.